Namaskar everyone. In this lecture, I will discuss most important article of the Indian Constitution. It is Article 21. यानी कि आज का जो लेक्चर है वो भारतीय संविधान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल पर आधारित है। ये आर्टिकल 21 है जिस पर आज मैं चर्चा करूंगी। दिस आर्टिकल टॉक्स अबाउट द protection of life and personal liberty. This article says, or the Article 21 says, that no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by the law. This protection is available to both citizens and the foreigners. About this article, we have two famous case laws. हमारे पास दो महत्वपूर्ण केस लॉज हैं. फर्स्ट इज द गोपालन केस ऑफ 1950 एंड सेकंड इज द मेनका गांधी केस ऑफ 1978. पहला जो केस है वो गोपालन का केस है जो कि 1950 का है. दूसरा केस मेनका गांधी का है जो कि 1978 का है. In Gopalan case, our Honorable Supreme Court held that the protection under the Article 21 is only against the executive actions of the state, not against the legislative actions. So, under this case, Honorable Court took a narrow interpretation of the Article 21. And secondly, it also held that the meaning of personal liberty is the liberty which is relating to a person or a body of a person. But in 1978, Honorable Court overruled its previous judgment which it had given in the Gopalan case. In Menka Gandhi case in 1978, Honorable Court held that the protection under the Article 21 is not only against the executive actions but also against the legislative actions. So it widened the scope of this article because it took a wider interpretation of the Article 21. And the Honorable Court also held that right to life does not only confined to animal existence or survival. It means जो right to life है वो ना केवल यहाँ तक सीमित है कि इंसान जी रहा है, वो सर्वाइव कर रहा है, but it also includes right to life with human dignity, and it includes all the aspects of human life which make it meaningful or complete. यानी कि जो right to life है इसके तहत right to life with human dignity यानी कि गरिमापूर्ण जीवन राइट टू लाइफ के अंदर आता है. दूसरा राइट टू लाइफ के अंदर वो सारे एस्पेक्ट शामिल किए जाते हैं जो कि ह्यूमन लाइफ को मीनिंगफुल बनाते हैं, उसको कंप्लीट करते हैं. सो वी कैन से दैट दिस आर्टिकल इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फंडामेंटल राइट in the Indian Constitution. We can see that it has various kinds of rights, and these rights can be included in the Article 21 of the Constitution. For example, right to livelihood, right to health, right to shelter, right to live in a clean environment, right to education, right to information,
right to refutation, right to sleep, right to get free legal aid, right to a fair trial, and right to information. There are various other rights which can be included under the Article 21 of the Indian Constitution. In this lecture, I will discuss right to education in a detailed way. We know that education is a basic human right. Education is a tool which ensures the all-round development of a human being. यानी कि जो शिक्षा है वो एक ऐसा माध्यम है जो कि मनुष्य के बहुमुखी विकास को सुनिश्चित करता है. In Indian Constitution, there was a provision under Article 45 which deals with the free and compulsory education to all the children between the age of 6 to 14 years. यानी कि जो भारतीय संविधान में वो आर्टिकल 45 के अंडर ये प्रावधान था कि जो 6 से 14 साल तक के बच्चे हैं उनको फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन दी जाए. बट वी नो दैट इट वाज गिवन इन द पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. हम जानते हैं कि जो पार्ट 4 है it deals with the directive principles of state policy, and we know that this part is non-justiciable. It means that it cannot be enforced by the courts. So इनका जो एक महत्व है वो उतना नहीं था जितना कि ये फंडामेंटल राइट्स का होता है, क्योंकि जो कोर्ट है वो उनको इन्फोर्स नहीं कर सकता. देयर इज ए फेमस केस लॉ. इट इज उन्नीन कृष्णन वर्सी स्टेट ऑफ AP. In this case, court held that right to education to the children between the age of 6 to 14 years is the fundamental right. इस केस में कोर्ट ने कहा कि जो 6 से 14 साल तक के बच्चे हैं उनकी जो शिक्षा का अधिकार है वो एक मौलिक अधिकार है. एंड we know that in 2002, 86th Amendment Act was passed by the Parliament, and through this Amendment Act, Article 21A was added, which deals with the right to education to all the children between the age of 6 to 14 years. In other words, we can say that Article 21A says that state shall provide free and compulsory education to all the children between the age of 6 to 14 years. It means जो सरकार है वो 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन मुहैया करवाएगी. We must remember two other points about the 86th Amendment Act of 2002. First is, it changed the subject matter of Article 45. Now the Article 45 says that state shall provide or state shall endure to provide early childhood care and education to the children until they complete the age of 6 years. यानी कि जो आर्टिकल 45 है वो ये कहता है कि जो सरकार है वो अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन प्रोवाइड करवाएगी जब तक कि बच्चे 6 साल तक की उम्र को कंप्लीट नहीं करते. सेकेंड, दिस अमेंडमेंट एडेड a new duty under Article 51A of the Indian Constitution. This article says that it shall be the duty of every citizen. It shall be the duty of every citizen to provide opportunities for the education
to his child or ward between the age of 6 to 14 years। यानी कि ये प्रत्येक सिटीजन की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक उसका एक दायित्व है, एक कर्तव्य है कि वो अपने बच्चे को वो शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाए। और ये जो एज का एक जो दायरा है वो 6 से 14 वर्ष का है। यानी कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, जितने भी बच्चे हैं, उनको शिक्षा के अवसर मुहैया करवाया जाए। ये ड्यूटी है प्रत्येक सिटीजन की। And in 2009, we know that our parliament enacted the Right to Education Act of 2009। 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत सरकार द्वारा पास किया गया। And its main aim was to implement the Article 21A of the Indian Constitution। इसका यही मकसद था कि जितने भी हमारे 6 से 14 साल तक के बच्चे हैं उनको शिक्षा मिले, उनका जो एक शिक्षा का एक मौलिक अधिकार है वो सुनिश्चित हो। हालांकि जो उच्च शिक्षा है, हायर एजुकेशन है, वो आज भी भारत में एक फंडामेंटल राइट नहीं है। Only the elementary education has been made the fundamental right in the Indian Constitution। इसीलिए हम कह सकते हैं कि कोई भी जो बच्चा है वो शिक्षा से वो वंचित ना रहे। इस कानून का और इस आर्टिकल का यही उद्देश्य है। एंड सेकेंड थिंग I would like to say is that if there is the violation of this fundamental right, citizen had the right to enforce this article or this fundamental right through the courts, through the intervention of court। यानी कि अगर किसी भी बच्चे का किसी भी स्तर पर उसके राइट का एक वायलेशन होता है तो उसके पास ये मौलिक अधिकार है वो अपने राइट को वो कोर्ट के माध्यम से वो लागू करवा सके। बिकॉज इट इज़ द फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी चाइल्ड टू गेट फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एट द एलिमेंट्री लेवल। So we have seen that this article is most important article of the Indian Constitution। If we take its quick revision, in first I discussed the constitutional provision of the Article 21, and after it I discussed the two famous case law. First one is the Gopalan case of 1950 and second is the Maneka Gandhi case of 1978। And after it, I discussed the various rights which can be included in the Article 21 of the Constitution। And in last, I discussed the right to education, and under it, I discussed the 86th Amendment Act of 2002 and what changes it had made in the list of fundamental rights, in the list of directive principles of the state policy, and in the list of fundamental duties। And in last I mentioned the Right to Education Act of 2009 and its importance। तो आज का जो लेक्चर है वो मेरा यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू सो मच और नमस्कार।